Good morning, team. I'm Viduranga, your safety practitioner. It's my pleasure to welcome you all to the Eden Project. Now, for your own safety, it's absolutely crucial that you listen carefully to what we're about to go over. Make sure you remember it, and most importantly, follow the rules. So, to all our new colleagues, all our friends, a very warm welcome. We're glad to have you. So, let's start with a simple question. What is your most valuable and important tool on the job? Think about it for a second. Is it your machine, your power tools? No. The most important tool at work is you. And our number one job, our absolute first priority, is to keep you, our most valuable asset, safe. So let's dive into our first section, which is all about understanding that why. Because really, when you get why the rules exist, following them just becomes second nature. It all comes down to personal responsibility. This quote pretty much says it all. Every single choice you make on this site, it has a ripple effect. One careless moment doesn't just put you at risk, it puts a whole family's future on the line. We can never, ever forget that. Okay, so with that why locked firmly in our minds, let's start talking about the how. And we're going to start with your personal safety toolkit, all the essential gear that's designed to protect you day in and day out. And let's be absolutely crystal clear on this one. Your personal protective equipment, or PPE, it's mandatory. It's totally non-negotiable. We're talking your helmet, safety glasses, earplugs, high-vis jacket, gloves, and safety shoes. This is your first and most important line of defense. There are zero exceptions. Now, your personal gear is absolutely crucial, but it's really only one piece of the puzzle. You see, true safety comes from the environment that we all create together. It's a team effort, which brings us to keeping a clean and safe site. Okay, let's learn the language of the site. It's pretty easy, really. These signs talk to us in colors. Blue means you must do this. Red means absolutely do not do this. Yellow is a heads up. It's warning you, hey, be careful, there's a hazard ahead. And green points you to a safe area or tells you where to go in an emergency. Solid trade, fire and legal, fire protection equipment, don't block. Whenever you see a yellow sign, imagine a friend shouting out, hey, watch out. It's telling you that the ground ahead might be uneven or there could be a cable on the floor that you could trip over. So a yellow sign means one thing. Keep your eyes wide open and watch your step. Now look at these two. The blue one is reminding you of a team rule, wearing PPE is mandatory. That's a yes. And the red one draws a clear line, no children allowed here. That's a strict no. So just remember, blue means yes, do it. And red means no, stop. Some red signs warn of a life-threatening danger, like this one, high voltage. This isn't just a no, this is a never. This sign means there is an invisible danger here, and touching it could mean death. You must always stay far away from signs like this. Nothing is more important than your life. Okay, time for a quick quiz. What is this sign telling you? Is it A, just be careful, or B, do not enter? You got it! The answer is B, do not enter. It signals a deadly hazard. Well done! All right, let's talk about health and hygiene. This is one rule where there are absolutely no exceptions. Spitting is strictly forbidden everywhere. In the canteen, in the accommodation areas, on the work site, nowhere is it okay. And why are we so strict about this? Because when you spit, you're not just making a mess, you're spreading diseases. Serious illnesses like the flu, TB, and pneumonia are spread through saliva. One person's bad habit can make your friends and coworkers sick. So let's show respect for each other by keeping everyone healthy, not by spitting. You know, our safety culture goes beyond just preventing accidents. It's also about promoting good health. Why? Because a healthy team is a safe team and a productive team. So let's look at a few healthy habits. Look, good hygiene is everybody's responsibility. It's so simple, but following this 6-step hand-washing cycle, especially before you eat and after using the toilet, is one of the easiest and best ways to protect yourself and your entire team from getting sick. Living and working together means we have to look out for each other. Keep your personal space clean. Always put trash where it belongs, in the bin. Don't share personal things like your towel or water bottle. And please, cover your mouth if you cough or sneeze. It's the mark of a good teammate and a responsible person. And this goes for our shared spaces too, especially the cafeteria. Let's stick to the good choices, right? Eat your food while you're seated, use an inside voice, and, this is a big one, clean up your own mess. It's all about showing respect for your coworkers and just being a helper. Just look at the difference here. It's night and day, right?
The site on the left is a disaster waiting to happen, full of trip hazards and things that just slow you down. But on the right, you've got a professional site. It's clean, it's organized, it's efficient. Which one do you want to work in? It's a no-brainer. So the bottom line is this: a tidy workspace is a safe workspace, period. This means putting all your tools, all your equipment, all your materials back where they belong the second you're done with them. Good housekeeping isn't just one person's job, it's on all of us. We have an absolute zero-tolerance policy for electrical hazards. You always use high-quality sockets and plugs. Never, and I mean never under any circumstances, should you insert bare or uninsulated wires into a socket. That's one of the fastest ways to cause a really, really serious accident. All right, now let's talk about working at height. Your safety harness, that's your lifeline. It is absolutely mandatory, and you've got to make sure it's securely anchored at all times. Falls from height are one of the most serious, fatal risks on any site. When it comes to access, you only use the designated secure ladders and make sure they're held steady by a coworker or tied off securely. You never ever climb on unstable things like boxes or drums just to get a little bit higher. And this is a rule you have got to remember. Never leave tools or any materials just sitting loose on an elevated platform. A dropped hammer or a wrench can become a lethal weapon for anyone who's working down below. Secure your tools. Let's talk about how to stop accidents before they even have a chance to start. Seriously, understanding how an incident grows is the absolute key to breaking the chain. It almost always begins with an unsafe condition. You can see a frayed lifting strap here. If you see something like this, a damaged tool, a little spill, a blocked walkway, you have a responsibility to report it immediately. This is the very first link in the chain of an accident. The next link in that chain is an unsafe act. In this case, someone is making the very dangerous choice to walk under a suspended load. This isn't an accident, it's a conscious decision that introduces a massive, massive risk. Now, what if that frayed strap cracks and the load slips, but it doesn't actually hit anyone? That's a near miss. And it's so tempting to just feel lucky and move on. But a near miss isn't luck. It is a critical, flashing red warning sign that something is seriously wrong and it has to be fixed. Because if those warnings get ignored, we end up here, at the final, tragic step, an accident. The load falls and someone gets hurt, or worse. You see how a preventable tragedy is almost always the result of a chain of smaller failures. Our job, together, is to break that chain at the earliest possible link. And breaking that chain early means being alert to all kinds of hazards, including fire. So use all your senses, be aware of the sight of smoke, the sound of crackling, the smell of something burning, or even just the feeling of unusual heat. Trust me, with hazards like fire, catching it early is everything. So we'll end with this question for you to take with you out there today. Safety is personal, yeah, but it's also a team commitment. It's about protecting yourself and protecting each other. Remember the real reason you're here. Let's all make the right choices today to make sure everyone goes home safe. And to keep everyone on this site sharp and focused, these things are strictly 100% forbidden. Using your phone while operating machinery, using tobacco or spitting, any kind of alcohol or drugs, or wearing headphones. All of these things create deadly distractions. A single moment of lost focus can cause an accident. So please stay alert, protect yourself, and protect your team. Let's be perfectly clear about this. Bringing any kind of weapon, cigarettes, or drugs onto this site is strictly prohibited. Breaking these rules means immediate removal from the site. This isn't just to be tough, it's to ensure the safety of you and the hundreds of other people working here. On this, there is no compromise. And now for the last, and maybe the most important topic. What do you do if an accident happens? The first and most critical rule is do not panic. Stay calm. Fear is your worst enemy in an emergency. A calm mind is what makes good decisions. If you or a coworker gets hurt, even if it seems like a minor scratch, you need to do these 3 things. First, stop whatever you're doing immediately. Second, do not try to move the injured person. You could make it worse. Third, tell your supervisor or the site office right away. Every single second counts. Today, I want you to make this your first task. Find out where the first aid station is. Learn the names of the designated first aiders in your area. In an emergency, knowing this information could save someone's life. This is your responsibility. विदुरांगा का नमस्कार। इस प्रोजेक्ट पर मैं आपका सेफ्टी प्रैक्टिशनर हूं
और आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए, आज जो बातें हम करने वाले हैं वो बहुत जरूरी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से सुनें, इन बातों को अच्छे से समझें और फिर हमेशा इनका पालन करें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं। हम सब यहाँ काम करने आते हैं, सही है, लेकिन कभी सोचा है असली वजह क्या है? वो ये है ताकि हम हर शाम काम खत्म करके अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास सुरक्षित लौट सकें। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है जो घर पर हमारा इंतजार कर रही है। तो चलिए हम सब मिलकर ये पक्का करें कि हम हर एक दिन बिना किसी चोट के उनके पास वापस जाएं। तो चलिए बात करते हैं कि साइट पर खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक सैनिक जंग में जाने से पहले अपना कवच पहनता है, वैसे ही काम पर आपका भी एक कवच है। हम इसे कहते हैं PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये काम की जगह पर खतरों से बचाने वाली आपकी पहली ढाल है। और ये है आपका पूरा सुरक्षा कवच, एकदम सिर से लेकर पांव तक। सबसे ऊपर हेलमेट, ये आपको ऊपर से गिरने वाली किसी भी चीज से बचाता है। और हाँ, इसे ठीक से पहनना है, ढीला ढाला नहीं। आंखों के लिए सेफ्टी चश्मा, जो धूल मिट्टी या किसी चिंगारी को आपकी आंखों में जाने से रोकता है। जहां मशीनें चलती हैं वहां बहुत शोर होता है, तो कानों के लिए ईयर प्लग्स। ये चमकदार जैकेट इसलिए है ताकि कोई भी आपको दूर से देख सके, खासकर जब रोशनी कम हो। हाथों के लिए दस्ताने, ताकि कोई कट या छिलने का डर न रहे। और आखिर में सेफ्टी शूज, ये इतने मजबूत होते हैं कि अगर कोई भारी चीज पैर पर गिर भी जाए तो आपके पैर सुरक्षित रहें। अच्छा, तो एक छोटा सा सवाल आप सबसे, कौन सी चीज आपके पैरों को भारी चीज गिरने की चोट से बचाती है? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही, सेफ्टी शूज। बहुत अच्छे। तो ठीक है, आपका कवच तो तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ कवच पहन लेना ही काफी नहीं होता है ना, हमें मैदान के नियम भी तो पता होने चाहिए। तो चलिए अब उन नियमों के बारे में जानते हैं जो साइट पर हमें हमेशा याद रखने हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बड़ा हादसा अचानक से नहीं होता, उसकी शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है। जैसे जमीन पर थोड़ा तेल या पानी गिरा है, ये है एक असुरक्षित स्थिति, और अगर आप उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तो वो हो गया असुरक्षित काम। अब मान लीजिए आप वहां से गुजरे और फिसलते फिसलते बचे, तो इसे नियर मिस कहते हैं। ये किस्मत की बात नहीं, ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग। ऐसी कोई भी बात हो तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताइए, ताकि उस छोटी सी चूक से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आपको साइट पर हर जगह ऐसे अलग अलग साइन बोर्ड दिखेंगे। ये हमारी सुरक्षा की अपनी एक भाषा है, चलो इसे सीखते हैं। जहां भी आपको नीला गोला दिखे, उसका मतलब है ये करना जरूरी ही जरूरी है, जैसे हेलमेट पहनना। जहां लाल गोला दिखे, उसका मतलब ये काम बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि सिगरेट पीना। पीला तिकोना आपको चेतावनी देता है, मतलब सावधान, आगे खतरा है, जैसे कि बिजली का करंट। और हरा रंग मतलब सब ठीक है, ये एक सुरक्षित जगह है या इमरजेंसी में बाहर जाने का रास्ता। चलिए एक और सवाल, बस ये पक्का करने के लिए कि आप सब ध्यान दे रहे हैं। नीले गोले वाला साइन क्या बताता है, याद आया? हाँ, वो बताता है कि ये काम करना अनिवार्य है, जरूरी है। जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, तारे फैली हैं, औजार पड़े हैं, कचरा है, यहाँ कोई भी ठोकर खाकर गिर सकता है। और दूसरी तरफ देखिए, हर चीज अपनी जगह पर, रास्ता एकदम साफ। हमें हमेशा हमेशा दाईं तरफ वाली जगह की तरह काम करना है। याद रखिए, साफ सुथरी जगह सिर्फ अच्छी नहीं दिखती, वो सुरक्षित भी होती है। काम खत्म होने के बाद अपना सामान सही जगह पर रखना हमारी जिम्मेदारी है। और एक चीज जिसके साथ कभी मजाक नहीं करना, वो है बिजली। कभी भी भूलकर भी नंगे तारों को सीधे सॉकेट में डालने की कोशिश मत करना, ये जानलेवा हो सकता है। हमेशा सही प्लग का इस्तेमाल करें और जमीन पर तारों को ऐसे फैला हुआ न छोड़ें, कोई भी उसमें उलझकर गिर सकता है और उसे गंभीर चोट आ सकती है। अब ये 4 बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इन मामलों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मतलब 0 टॉलरेंस। पहला, काम करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, आपका ध्यान भटका तो दुर्घटना घटी। दूसरा, तंबाकू या गुटखा खाकर इधर उधर थूकना सख्त मना है। तीसरा, शराब पीकर या कोई भी नशा करके काम पर आना एक बहुत बड़ा अपराध है। और चौथा, काम के दौरान कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनना मना है,
आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर और आसपास की सुरक्षा पर होना चाहिए। अच्छा, तो सुरक्षा के नियम सिर्फ काम की जगह पर ही लागू नहीं होते, वो वहां भी लागू होते हैं जहां हम सब एक साथ रहते हैं और खाना खाते हैं। मतलब हमारी कैंटीन और हमारे रहने की जगह, ये हम सबका घर जैसा है और इसे साफ और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कैंटीन में हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये तस्वीर सब कुछ साफ साफ बता रही है। अपनी बारी का इंतजार करें, शांति से अपनी जगह पर बैठकर खाना खाएं, चिल्ला चोट न करें, और सबसे जरूरी बात, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट और बची हुई गंदगी को सही जगह कूड़ेदान में डालें। अपनी जगह को साफ छोड़ें ताकि दूसरे भी वहां आराम से बैठ सकें। ये एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन सेहत के लिए बहुत बड़ी बात है। पानी पीने के लिए कभी भी एक ही कॉमन ग्लास या कप का इस्तेमाल ना करें। इससे एक इंसान के कीटाणु दूसरे तक पहुंचते हैं और बीमारियां फैलती हैं। सबसे अच्छा और सही तरीका है कि आप सब अपनी अपनी पानी की बोतल रखें और उसी से पानी पिएं। और हाँ, अपनी खुद की साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है। खासतौर पर खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना कभी ना भूलें। याद रखिए, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप और आपकी टीम सुरक्षित रहेगी। चलिए, अब हम आज के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे आग लग जाए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहली और जरूरी बात है, घबराना बिल्कुल नहीं है। शांत रहकर उस प्लान पर काम करना है जो हमें सिखाया गया है। किसी भी बड़े खतरे जैसे आग का पता जल्दी लगाने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। अपनी आंखों से देखें, कहीं कोई धुआं तो नहीं उठ रहा। अपने कानों से सुने, कहीं कुछ चटकने या गैस लीक होने जैसी आवाज तो नहीं आ रही। अपनी नाक से सूंघे, कहीं कुछ जलने या प्लास्टिक पिघलने की गंध तो नहीं है। और अगर कोई दरवाजा बंद है तो उसे खोलने से पहले हाथ से छूकर देखें कि कहीं वो असामान्य रूप से गर्म तो नहीं है। अगर आग लग जाती है तो ये 4 कदम उठाने हैं। पहला, अगर आग बहुत छोटी है और आप उसे बुझा सकते हैं तो तुरंत पानी या रेत का इस्तेमाल करें। दूसरा, ये पक्का करें कि आग बुझाने के सिलेंडर तक पहुंचने का रास्ता हमेशा साफ रहे। तीसरा, आग के आसपास से जलने वाली चीजों को, जैसे तेल, कागज या प्लास्टिक, को तुरंत हटा दें। और चौथा, सबसे जरूरी कदम, चाहे घटना कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इसकी जानकारी फौरन अपने सेफ्टी ऑफिसर को दें। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे एक साथ दोहरा लेते हैं। ये आपके पहले दिन और हर दिन की चेकलिस्ट है। इन बातों को हमेशा याद रखना है। ये एक आदत बन जानी चाहिए। हमेशा अपनी पूरी पीपीई पहनें, साइट पर लगे सभी सेफ्टी साइन बोर्ड को समझें और उनका पालन करें। अपने काम करने की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें। कोई भी खतरा या चोट दिखे तो उसकी सूचना तुरंत दें। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें और इमरजेंसी में क्या करना है, ये प्लान हमेशा याद रखें। बस ये कुछ आसान नियम हैं जो आपको और आपके साथियों को सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों, आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, इसे गांठ बांध लीजिए। आपकी सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अपना ध्यान रखिए, अपने साथ काम करने वालों का ध्यान रखिए और हर दिन काम के बाद सुरक्षित अपने घर लौटिए। धन्यवाद। And finally, I want you to always remember one thing. Every morning when you come to work, there is someone at home waiting for you, your family. Every rule we have discussed today exists for one reason and one reason only, to make sure that you return to your family safely at the end of every day. For them, please work safely. Thank you and welcome to the team.